जय जगन्नाथ। OSSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पाई आमे जो क्वेश्चन आंसर रो सीरीज स्टार्ट करथिले तार आज पार्ट 4 चलंतो स्टार्ट करिबा आज रो सेशन। ए क्लाइंट हैज एन इन्फेक्शन स्प्रेडिंग थ्रू ड्रॉपलेट्स। गोटे पेशेंट रो इन्फेक्शन होईची जोटा कि तार ड्रॉपलेट्स द्वारा स्प्रेड होची। The nurse is ready to check the client's temperature. ना नर्स कौन करुच्ची क्लाइंट रो टेम्परेचर चेक करिबो। Which of the following should the nurse use to control the spread of infection? कौ जिनस नर्स यूज करिबो जोटा कि इन्फेक्शन रो स्प्रेड टाको से कंट्रोल करि परिबो। ऑप्शन ए मास्क, गॉगल्स, गाउन, ग्लोव्स। यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए मास्क। जिते बड़े भी इन्फेक्शन आमर ड्रॉपलेट द्वारा स्प्रेड होतबो सेते बड़े आमे मास्क यूज करूचे। गॉगल्स, गाउन एंड ग्लोव्स ए तीनटा जिनस आमे यूज करूचे ताकि यूज्ड इन स्टैंडर्ड और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रे। The leakage of blood backwards through the mitral valve each time the left ventricle of the heart contracts is known as। mitral valve द्वारा जिते बड़े ब्लड टा बैकवर्ड होची लेफ्ट वेंट्रिकल रो ब्लड टा बैकवर्ड होची सेटा को कौन कहा जाउची? mitral stenosis, mitral prolapse, mitral systole, mitral regurgitation। यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी mitral regurgitation। mitral stenosis रे हमरो कौन होची ना narrowing of valve opening। mitral प्रोलैप्स रे कौन होची ना भाल्व टा हमरो बल्ज हो जाउची। mitral systole हमरो नॉट ए मेडिकल कंडीशन। आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस शोन इन द गिवन पिक्चर। जो इमेज टा देखि पारुचंती एटा हमरो को कंट्रासेप्टिव डिवाइस? डायफ्राम, फीमेल कंडोम, मेल कंडोम, vaginal sponge। यार करेक्ट आंसर कौन? फीमेल कंडोम। Which of the following statements is incorrect with respect to portal vein? portal vein रो को statement आमरो incorrect? portal blood comes from the gastrointestinal system। portal blood is rich in nutrients। portal circulation constitutes 80% of the circulation to the liver। portal blood is rich in oxygen। इठी हमरो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देछि ना कौन हम? portal blood rich in oxygen। portal vein रे केते बेले भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड न थाए। A leader can be effective in one circumstance and can be ineffective in another circumstance. This is a leader's ability to adapt, which can be their most important tool in the workplace. This theory of leadership known as contingency, strategic, democratic, autocratic। यार करेक्ट आंसर आसीबो contingency। The main features of the rural community are that the rural community is closely associated with work in different occupation and contact is less between members। direct effect of natural elements like rains, drought, heat on their lives। remote from nature, work in closed environment।
यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रेन्स ड्रॉट हीट ऑन देयर लाइव्स. A nurse working in a ward noticed that blood has spilled on the floor during blood collection. During blood collection time रे nurse notice कला जे blood floor रे spill ହେଇची. The spill covers an area of more than 20%. जो spill टा ହେଇची केते area cover करची ना more than 20 centimeter. The nurse asked the housekeeping staff to clean the spill on the floor. Nurse कौन कला ना housekeeping staff को कहला कि spill on the floor जोटा ହେଇची ताको clean करिया पई. What would be the recommended disinfectant used for handling this spill be? 1:10% dilution of 5% sodium hypochlorite, 1:100 dilution of 5% sodium hypochlorite, 1:2 dilution of 2% bleach solution, 1:5 dilution of 5% bleach solution. ब्लीच सॉल्यूशन आमर पिल को क्लीन करिया पाए यूज हुए नहीं. 1:100 डाइल्यूशन ऑफ 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आमर यूज हुए जेते बेले पिल एरिया कवर होता है 10 सेंटीमीटर. एठी आमर स्पिल एरिया कवर होइछि 20 सेंटीमीटर मोर देन 20 सेंटीमीटर. ताको क्लीन करिया पाए कोन यूज हुए 1:10 डाइल्यूशन ऑफ 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड. Option A is the correct answer. On physical examination a patient's chest, a nurse observed a barrel chest. फिजिकल एग्जामिनेशन करिबा टाइम रे नर्स कोन आइडेंटिफाई कला पेशेंट रो ना पेशेंट रो चेस्ट होजी तारो बेरेल चेस्ट अछि. ए बेरेल चेस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विथ को केस रे हमरो बेरेल चेस्ट देखा जाए. ऑप्शन ए रिकेट्स, मार्फन सिंड्रोम, काइफोस्कोलियोसिस, एम्फाइजिमा. आमर रिकेट्स रे देखा जाए पिजियन चेस्ट, मार्फन सिंड्रोम रे देखा जाए चेस्ट वाल आमर चेस्ट वाल इनवर्ड एंड आउटवर्ड थाए. आउ कौन देखा जाए मार्फन सिंड्रोम रे ना लॉन्ग आर्म एंड लॉन्ग लेग्स. काइफोस्कोलियोसिस कौन ना आमर एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन. एम्फाइसीमा आमर करेक्ट आंसर. एम्फाइसीमा रे पेशेंट रो बेरेल चेस्ट देखा जाए. A nurse plans to teach a postpartum mother the prevention of breast engorgement. गोटे postpartum mother को nurse teaching दौचु केमिति breast engorgement को prevention करिबो. Which of the following measures would the nurse include in her teaching plan? को measures टा को nurse तारो teaching plan रे include करिबो. Use nipple shields while feeding the neonate, massage the breast vigorously before feeding, breastfeed the neonate at regular intervals, decrease the intake of fluid during the first 24 to 48 hours. Breast engorgement हम कौन करिबा ना breastfeed the neonate at regular interval. A physician has prescribed tablet atenolol 25 mg for a patient. फिजिशियन पेशेंट को कौन प्रेस्क्राइब करचंती ना टैबलेट एटेनोलॉल 25 mg. On assessment the nurse finds that the patient's systolic blood pressure is 90 mm of Hg. नर्स असेसमेंट रे कौन पाइला ना पेशेंट रो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अच्छी 90 mm Hg. The appropriate nursing action would be withhold the drug and notify the prescriber, monitor serum potassium levels,
administer the drug and continue monitoring the blood pressure, advise the patient to increase sodium intake. atenolol कौन atenolol होची हमरो बीटा ब्लॉकर जोटा कि बीटा ब्लॉकर कौन करे टू ट्रीट irregular heart rhythm and decrease blood pressure. तो आम कौन करिया पेशेंट रो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑलरेडी 90 mm ऑफ एचजी अच्छी तो आम जदि पेशेंट को मेडिसिन टा दौचु तार आहरी हाइपरटेंशन होबार चांस रहिबो सेति आम कौन करिवो ना withhold the drug and notify the physician. An example of inductive reasoning is inductive reasoning रा example कौन reasoning from a single diabetic patient to all diabetic patient using a computerized nursing care plan to care for insulin dependent diabetic patients, reasoning from all chronically ill patient to a single chronically ill patient using a standard nursing care plan to care for a specific patient. Inductive reasoning रा हमरो कौन होबो ना reasoning from a single diabetic patient to all diabetic patient. नेक्स्ट तीनटा जो हमरो रोची सेटा हमरो आसीबो डिडक्टिव रीजनिंग रो एग्जांपल. इंडक्टिव रीजनिंग रे कौन हुए ना स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन. डिडक्टिव रीजनिंग रे हमरो आसीबो जनरल टू स्पेसिफिक conclusion. Which of the following viruses can cause post transfusion hepatitis? को हेपाटाइटिस टा हमरो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी. पोस्ट हेपाटाइटिस ए हमरो स्प्रेड होचु फिको ओरल रूट द्वारा फिको ओरल रूट. हेपाटाइटिस बी आमर होची ट्रांसमिटेड भाया ब्लड. हेपाटाइटिस डी होची को एक्जिस्टिंग ऑफ हेपाटाइटिस बी. तमरो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपाटाइटिस कौन होबो ना हेपाटाइटिस सी. What is the usual site of intramuscular injection a nurse will choose in an adult for Z-track technique? Z-track technique रे हमें को इंजेक्शन दौचु ना इंजेक्शन आयरन. Z-track रे मेतले adult को IM इंजेक्शन दौचु को मसल रे दबो हमें डेल्टॉइड रेक्टस फेमोरिस वेंट्रोग्लूटियल भास्टस लेटरालिस. भास्टस लेटरालिस हमरो यूज होची इन्फांट केस रे आमे जते बेले इन्फांट को आईएम इंजेक्शन दउचु. यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल. हाउ ए नर्स विल हैव टू कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम. यूरिन कल्चर सैंपल पाई कौठु आमे यूरिन कलेक्शन करिबा जते बेले पेशेंट रो कैथेटर अछि. विथ नीडल एस्पिरेशन एम्प्टी यूरिन फ्रॉम बैग कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर डिस्कनेक्ट बैग एंड कलेक्ट. आमे जते बेले कल्चर पाई सैंपल नौचु विथ नीडल एस्पिरेशन रे आमे सैंपल नबु काहे ना कल्चर पाई सैंपल हमरो स्टेराइल दरकार. आमे जदि ए तीनटा प्रोसेस रे सैंपल नौचु ताले हमरोटा अनस्टेराइल हो जिवो. ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट. एंटीरियर पिट्यूटरी रू
कौ हार्मोन सिक्रेट होची एक्सेप्ट फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन जीएच है ग्रोथ हार्मोन जीआरएच है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रो हमर को हार्मोन सीक्रेट होची एक्सेप्ट जीआरएच आ बाकी जो हार्मोन देछि सेगुडा एंटीरियर पिट्यूटरी रो रिलीज होची जीआरएच हमर रिलीज होची हाइपोथैलेमस रो ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट मीन्स ग्लूकोज लेवल्स over 2 days, over 14 days, over 30 days, over 90 days आमर HbA1c जो टेस्ट होची सेटा केते दिन रो ग्लूकोज हमको सह करूची ना ओवर 90 days हाउ डू यू नो दैट इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज फंक्शनिंग गोटे पेशेंट रो आईसीडी ड्रेन अच्छी आमे देखिबा आमे जानिबा कि केमती तारो आईसीडी ड्रेन टा फंक्शनिंग होची कि नाही कंटिन्यूअस बबलिंग इन वाटर सील बॉटल कंटिन्यूअस बबलिंग फ्रॉम सक्शन ट्यूब ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बॉटल नो बबलिंग इन द ड्रेनेज बॉटल एरा आंसर आसीबो ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम ड्रेनेज बॉटल कंटिन्यूअस बबलिंग रे हमर जदी हुए ताले सेटा हमर एयर लीकेज होची नो बबलिंग इन द वाटर ड्रेनेज बॉटल रे हेले हमर कोन ना ड्रेनेज सिस्टम टा नॉट फंक्शनिंग A subjective feeling about what is the right or wrong in psychiatric medicine is said to be values, morality, religion, bioethics. The correct answer आसीबो option B morality. The nurse has to apply erythromycin ointment to a newborn child. The newborn child ro nurse erythromycin ointment apply करिबो which area of eye she is support placed it eye रो को एरिया रे से एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट को अप्लाई करिबो on the cornea under the eyelid lower conjunctiva upper conjunctiva एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट हमरो को क्षेत्र रे यूज हुए ना ऑप्थाल्मिया नियोनेट्रम रे ऑप्थाल्मिया नियोनेट्रम रे यार करेक्ट आंसर कौन आसीबो ना लोअर कंजक्टिवा आ गोटे जिनस मन रखिथे जिते बेले डॉक्टर एडवाइस करूचंती आई ड्रॉप की आई ऑइंटमेंट ऑलवेज फास्ट एडमिनिस्टर होबो आई ड्रॉप देन आई ऑइंटमेंट फ्लूइड ओवरलोड इन ए पेशेंट में कॉज ते पेशेंट रो फ्लूइड ओवरलोड हेले कौन होबो एंजियो एडिमा पेरिफेरल एडिमा पल्मोनारी एडिमा सेरिब्रल एडिमा फ्लूइड ओवरलोड पेशेंट रे कौन होबो ना पल्मोनारी एडिमा एंजियो एडिमा रे हमर कौन होची ना लोकलाइज्ड स्वेलिंग पेरिफेरल एडिमा रे कौन होची सिस्टेमिक वेनस कंजेशन सेरिब्रल एडिमा हमरो कांकी होची ना caused by trauma or injury all are true regarding H pylori infection except H pylori infection रे सबु स्टेटमेंट ट्रू कोउटा को छाड़ी की except is a gram positive bacteria
is eradicated by triple therapy, produces urease enzyme, causes maltoma tumor. तो आमर करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एठी हमको एक्सेप्ट पचारिछि एच पाइलोरी इन्फेक्शन आमर होछि ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. Which one of the following statements by a patient with backache should alert the nurse? गोटे पेशेंट रो तार बैक पेन होची कोट स्टेटमेंट हमको अलर्ट करिवो. पेन ऑन मूवमेंट, पेन रेडिएटिंग द लेग, पेरिनियल एनेस्थेसिया, पेन सेंसेशन लॉस्ट इन फीट. तेले पेरिनियल एनेस्थेसिया रे हमरो सीवियर बैक पेन होची सेटा हमको अलर्ट करिवो ना काहेकि ना पेरिनियल एनेस्थेसिया रे बैक पेन हेले एटा हमरो मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन. जोटा कि कौन कॉज हो पारे ना कोडा इक्विना सिंड्रोम. द पर्पज ऑफ लिम्फ नोड्स इज टू ट्रैप. लिम्फ नोड रो पर्पज कौन? एंटीजेन्स, मैक्रोफेजेस, हार्मोन्स, आरबीसी. आरबीसी आमर होची ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. हार्मोन्स आमर रोची केमिकल मैसेंजर. मैक्रोफेजेस आमर रोची डिफेंस एगेंस्ट इम्यून सिस्टम. आमर लिम्फ नोड रो पर्पज कौन रोची? लिम्फ नोड इज टू ट्रैप एंटीजेन्स. साइटोकाइन्स आर केमिकल मैसेंजर व्हिच. आमर साइटोकाइन्स जो केमिकल मैसेंजर रोची तार काम कौन? किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोमोट इन्फ्लेमेशन, कॉज सीवियर पेन, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. इरा करेक्ट आंसर प्रोमोट इन्फ्लेमेशन. किल माइक्रो ऑर्गेनिजम कौन ना साइटोकाइन्स डू नॉट डायरेक्टली किल माइक्रो ऑर्गेनिजम. कॉजेस सीवियर पेन आमर कहीं होची ना नर्व स्टिमुलेशन टू टिश्यू डैमेज. प्रोड्यूस एंटीबॉडी क्या द्वारा होची ना बी लिम्फोसाइट. तो हम साइटोकाइनेस केमिकल मैसेंजर कौन होबो ना प्रोमोट इन्फ्लेमेशन. द थाइमस रिलेटेड टी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एनके सेल्स, recognize B cell, recognize antibodies own cell. प्रोड्यूस एंटीबॉडी आमर रहिला बी लिम्फोसाइट रो काम. बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एनके सेल. एनके मीन्स नेचुरल किलर सेल्स. यार काम कार ना बोन मेरो रो. तमरो थाइमस रिलेटेड टी सेल कौन होबो ना recognize body's own cell. A nurse caring a patient on pancreatic enzyme replacement therapy should assess them for. गोटे नर्स पेशेंट रो केयर करुच्ची जो पेशेंट रो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी चलची. नर्स कौन आसेस करिबा? वेट गेन, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, जीआई इरिटेशन. पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट कले हमर कौन होबो ना जीआई इरिटेशन होबो. इटा तार रोची डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट. जीआई इरिटेशन हेले कौन कौन होबो? नाउजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन. H2 blocker of choice in liver disease.
लिवर डिजीज रे कौ H2 ब्लॉकर दिया जाए सिमेटिडिन रानिटिडिन फेमोटिडिन निजाटिडिन लिवर डिजीज रे आमर H2 ब्लॉकर चॉइस होची निजाटिडिन निजाटिडिन आमर होची मिनिमल हेपाटिक मेटाबॉलिज्म जोटा कि 60 to 90%। कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल बाय कार्डियक मसलटा स्केलेटल मसल ठारू काहेकि डिफरेंट इट कंटेन्स एक्टिन एंड मायोसिन इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी इट नीड्स कैल्शियम फॉर कंट्रैक्शन इट थ्राइव्स विदाउट ऑक्सीजन एयर करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी कंटेन्स एक्टिन एंड मायोसिन एंड इट नीड्स कैल्शियम कंट्रैक्शन पई हमर दीटा जाक मसल दरकार बोथ मसल्स यूज द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर ऑफ ए नियोनेट डायग्नोस्ड विथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस टे पेशेंट रो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डायग्नोस्ड होईची नर्स कौन एक्सप्लेन करिबो तार मदर को दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन काहेकि नेसेसरी एंड टा कौन प्रिवेंट करिबो लिवर लंग्स किडनी एंड ब्रेन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कौन ना हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न रो हेमोलाइटिक डिजीज जोटा कि बिलिरुबिन एक्युमुलेशन हो बिलिरुबिन एक्युमुलेशन हेले सेटा जाइकी ब्रेन रे एक्युमुलेशन हो जदि आमे पेशेंट को ट्रीट न करूचे ताले ब्रेन रे एक्युमुलेशन होइकी ताको आमे कहूचे कर्निक टेरस एनकेफालोपैथी तमरो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कौन प्रिवेंट करिबो कौन डैमेज प्रिवेंट करिबो ना ब्रेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस ए नर्स हैज टू कंसीडर एज एन इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशन albumin level 2.5 gram per dl pre-albumin level 18 mg per dl transferrin level 244 mg per dl total lymphocytes 1900 microliter good nutrition रो हमरो इंडिकेटर कौन albumin level 2.5 gram हमरो एटा abnormal ना normal albumin normal albumin level 3.5 to 5.1 gram per dl करेक्ट आंसर आसीबो प्री एल्बुमिन लेवल 18 mg per dl प्री एल्बुमिन रो नॉर्मल लेवल होची 15 to 36 mg per dl टी हमरो 18 देछि माने नॉर्मल अछि ट्रांसफरिन लेवल 244 mg per dl एटा नॉर्मल अछि किंतु ट्रांसफरिन आमरो गुड न्यूट्रिशन लो इंडिकेटर नुह ट्रांसफरिन आमरो कौन करे ना आयरन को स्टोर करे ट्रांसफरिन लेवल लो नॉर्मल वैल्यू केते ना 200 to 400 mg per dl टोटल लिम्फोसाइट 1900 माइक्रोलीटर एटा भी आमरो नॉर्मल अछि किंतु एटा आमरो गुड न्यूट्रिशन लो इंडिकेटर नुह काहेकि ना लिम्फोसाइट आमर होची इम्यून सिस्टम रे काम करे टोटल लिम्फोसाइट नॉर्मल लेवल केते 1000 to 4800 माइक्रोलीटर
आज जो क्वेश्चन आम डिस्कस कले जदि कहार भी किसी डाउट थी कमेंट सेक्शन में पचारे मते आज सेशन आपण मानक केमती लगिला कमेंट रे कहिबे। थैंक यू।